Welcome, dear students. Hope you're fine. As you know, we are discussing direct and indirect speech. In the previous lesson, we discussed three rules of direct and indirect speech. In today's lesson, we'll start from rule 4 of direct and indirect speech. Now, let us start rule number 4. Rule number 4, direct speech to indirect speech conversion, interrogative sentences. No conjunction is used. No conjunction is used. Let us first know what is conjunction. Conjunction is a joining word. Conjunction is a joining word. If a sentence in direct speech begins with a question, what, where, when, as the question word itself acts as joining clause. That means no conjunction is used if in direct speech a sentence begins with a question. कोई भी कंजक्शन इस्तेमाल नहीं होगा अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में स्टार्ट होता है व्हाट से वायर से व्हेन से because as the question word itself acts as a joining clause, right? So no conjunction is used if a sentence in direct speech begins with a question, what, when, and where. What, where, when, as the question word itself acts as a joining clause, right? Now example, direct to indirect speech example. डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच जो है इसमें एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहाँ वायर डू यू लिव आस्क द बॉय. यहाँ पे इस सेंटेंस में वायर इस्तेमाल हुआ. वायर डू यू लिव. सो यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट इसको इस डायरेक्ट में चेंज करेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको बोलेंगे द बॉय वायर डू यू लिव आस्क द बॉय. और यहाँ पे हम इस इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे बोलेंगे द बॉय इनक्वायर्ड वायर I lived. The boy inquired where I lived. So यहाँ पे कोई भी कंजक्शन इस्तेमाल नहीं हुआ. So next point, if a direct speech begins with an auxiliary verb or helping verb, the joining clause should be if or whether. और एक रूल है अगर डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस में वो auxiliary verb या helping verb से यानी ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्लिक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो जॉइनिंग क्लॉज शुड बी इफ और वेदर. जो जॉइन होगा, जो जॉइन क्लॉज करेगा, सो इट शुड बी इफ और वेदर. फॉर एग्जांपल, ही सेड शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी. विल यू कम फॉर द पार्टी. सो यहाँ पे इंडायरेक्ट में आएगा शी आस्क्ड वेदर वी शुड कम, whether we should come for the party. So if a direct speech begins with an auxiliary, that is auxiliary verb, helping verb, the joining clause should be if or whether. तो यहाँ पे joining clause जो होगा, जो clause को join करेगा, it should be if or whether. So direct में she said will you come for the party. will you come for the party, she said. So इसको हम change करेंगे indirect में she asked. सो यहाँ पे चेंज हो गया ये इनडायरेक्ट में. तो किससे, यहाँ पे हमने जॉइनिंग क्लॉज, जो जॉइन क्लॉज के वेदर से. सो यहाँ पे आएगा शी आस्क्ड वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी. और एक पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब सच एज सेड टू चेंजेस टू इंक्वायर्ड, आस्क्ड और डिमांड. रिमेंबर इट. जो रिपोर्टिंग वर्ब्स है, फॉर एग्जांपल सेड है या सेड टू है, दे चेंजेस इनटू inquired, asked or demand. They changes into inquired, asked or demand. Let me repeat it. The these reporting verbs said or said to, they changes into inquired, asked or demand. हाँ. So यहाँ पे एक सेंटेंस है डायरेक्ट में, he said to me what are you wearing. So यहाँ पे आएगा he asked, यानी said to किस में चेंज हो गया, या asked में. He asked me what I was wearing.
So direct speech to indirect speech changes in models. While changing direct speech to indirect speech, the models used in the sentence change like जो मॉडल्स हैं वो चेंज किस में होते हैं, डायरेक्ट में चेंज करने के बाद डायरेक्ट में व्हेन वी चेंज द सेंटेंस एंड डायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सो यहाँ पे जो द मॉडल्स विच वी चेंज हियर और एज अंडर जो मॉडल्स विच आर यूज्ड इन द सेंटेंस दे आर द चेंजेस विच टुक प्लेस इन द इनडायरेक्ट स्पीच दे आर like this. Can becomes could, can becomes could, remember it. Can becomes could, may becomes might, must becomes had to or would have to. Let me repeat. Can becomes could, may becomes will it. Can becomes could, may becomes might, must becomes had to or would have to. Now check these examples. Direct. She said she can dance. She said she can dance. और can किस में चेंज होगा, indirect में, could में. So direct she said she can dance. Now indirect में she said that she could dance. Can could में हो गया. Direct में he said I may buy a dress. I may buy a dress. तो indirect में I might किस में might में. He said that she might buy a dress. Buy may किस में चेंज हो गया, might में. इसी तरह रशीद सेड आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट. सो माइट आई मस्ट किस में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, रशीद सेड दैट ही हैड टू. सो मस्ट यहाँ किस में चेंज हो गया, हैड टू. ही हैड टू कंप्लीट द असाइनमेंट. जिस तरह ऊपर मैंने कहा मस्ट किस में चेंज होता है, हैड टू में और वुड हैव टू. सो रशीद सेड दैट यानी मस्ट किस यहाँ पे इस जगह में मस्ट किस में तब्दील हो गया, हैड टू में. रशीद सेड दैट ही हैड टू कंप्लीट द असाइनमेंट. इस तरह जैसे हमने इस सेंटेंस तीन ये जो पॉइंट है इसमें मस्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया. मस्ट हैड बिकम्स मस्ट चेंज इंटरेक्ट स्पीच में हैड टू एंड वुड हैव टू. हैड टू वुड हैव टू. मस्ट किस में चेंज होता है, डिलीट हैड टू and would have to, had to or would have to. So there are no changes that there are models that do not change. models ऐसे हैं जो चेंज नहीं होते हैं. कौन कौन सा मॉडल चेंज नहीं होता है, could, would, should, would, might, ought to. delete. could जो मॉडल्स इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होते हैं, फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. The models that do not change they are could, would, should. ऐसे याद कीजिए, could, would, should, might, ought to. could, would, should, might, ought to. could, would, should, might, ought to. Right? So इसको आज याद कीजिए. The models that do not change in the indirect speech are could, would, should, might, and ought to. could, would, should, might and ought to. जिस तरह एग्जाम्पल है, that she said I should clean the house. she said I should clean the house. indirect में she said that she should clean the house. she should यहाँ पे चेंज नहीं होगा. she said that she should clean the house. डायरेक्ट स्पीच टू इंडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन. प्रोनाउन हमें पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या है. प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. फॉर एग्जांपल ही, रशीद के बदले हमने ही इस्तेमाल किया, शी इस्तेमाल किया. सो दीज आर द प्रोनाउंस. डायरेक्ट स्पीच टू इंडायरेक्ट स्पीच एग्जांपल. द फर्स्ट पर्सन इन द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच. दीज आर द 3 रूल्स. जहाँ पे द फर्स्ट रूल 6, उसमें 3 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट किसमें क्या है, द फर्स्ट पर्सन changes. The first person in the direct speech changes as per the subject of the speech. It depends on the subject of the speech. It depends on the subject of the speech. It takes place as per the. That means this first person changes as per the subject of the speech. For example, he said, "I am in class 12th." He said that he was in class 12th. So first person यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ कैसे हुआ, as per the need, as per the
as per the subject of the speech. He said, I'm in class 12th. He said that he was in class 12th. The second person of the direct speech changes as per the object of the reporting speech. So दूसरा point जो है दो second person किस में होता है as per the object of the speech, as per the object of the reporting speech, right? दो so that means first person change होता है as per the as first person changes as per the subject of the speech, and second person of the direct speech changes as per the object of the reporting speech, right? For example, she says to them, you have done your work. The second person, she says to them, you have done your work. She tells them that they have done their work. So it changes as per the reporting speech. So first person changes as per the subject of the speech, second person changes as per the object of the reporting speech. Now the third person, मैंने कहा ना रूल 6 में इसके 3 पार्ट्स हैं. नाउ द थर्ड पर्सन ऑफ डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज. जो थर्ड पर्सन है वो इस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होता है. ही सेज शी टीच्स वेल. यहाँ पे शी टीच्स वेल, दिस इज थर्ड पर्सन. यहाँ ही सेज शी टीच्स वेल, सो यहाँ पे आएगा शी सेज दैट शी टीच्स वेल, राइट. क्वेश्चन नंबर इट इज़ रूल नंबर 7. इसको आप ड्रिल कीजिए से रूल नंबर 6 को, और इसमें 3 पार्ट्स हैं, इसको ठीक तरह से अंडरस्टैंड कीजिए. फर्स्ट पर्सन चेंज होता है एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच, सेकंड पर्सन चेंज होता है एज पर द रिपोर्टिंग स्पीच, एंड थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है. सो रूल नंबर 7 है डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, रिक्वेस्ट, कमांड, विश, एक्सक्लेमेशन. Indirect speech is supported by some verbs like requested, ordered, suggested, and advised. Forbid is used for negative sentences. Therefore, the imperative mood in the direct speech changes into infinitive in indirect speech. So, the imperative mood in the direct speech changes into the infinitive in indirect speech. For example, हमारे पास example है direct. She said to her, please complete it. Please complete it. तो indirect में आएगा she requested her to complete it. She requested her to please complete it. इस तरह और एक है Hamid said to Ramid sit down. So यहाँ पे आएगा Hamid ordered Ramid to sit down. In exclamatory sentences and that express grief, sorrow, happiness, applaud, interjections are removed. यहाँ पे interjections removed हो जाते हैं and the sentence is changed to an assertive sentence. So important point है, in exclamatory sentences that expresses grief, sorrow, happiness, जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें एक्सप्रेस ग्रीफ, सॉरो और हैप्पीनेस होता है या फ्लाउड होता है, वहाँ पे इंटरजेक्शंस दे और इंटरजेक्शंस आर रिमूव्ड एंड द सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू एन एसेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सेंटेंस है शी सेड अलाउस आई एम अनडन. अलाउस आई एम अनडन. इनडायरेक्ट में शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट शी वाज अनडन. सो यहाँ पे इंटरजेक्शन रिमूव है. डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन, पंक्चुएशंस. इन यहाँ पे पंक्चुएशन कैसे इस्तेमाल करते हैं. इन डायरेक्ट स्पीच द वर्ड्स एक्चुअली स्पोकन शुड बी इन कोट्स. जहाँ पे कोट्स है इस कोट्स में रखना है, एंड ऑलवेज बिगिन्स विद कैपिटल लेटर. एग्जांपल शी सेड आई एम द बेस्ट. यहाँ पे आई, यहाँ पे ये जो है जिस इट हैज़ बीन केप्ट इन कैप्ट, इट हैज़ केप्ट इन एज कैपिटल. सो बिकॉज दिस इज ए रूल. सो आई एम द, यहाँ पे कोट्स में है आई एम द बेस्ट. सो इन डायरेक्ट स्पीच the actual word spoken, they are kept in quotes. This much also you know. Now full stop, comma, exclamation or question marks are placed inside the closing inverted commas. So यहाँ पे जो important point है को full stop जो है, excl या comma जो है, exclamation और question mark है, they are kept within the quotes. को that means जो इन डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स जो एक्चुअली होते हैं, जो स्पोकन वर्ड्स जो होते हैं, वो दे आर बीइंग केप्ट इन द कोट्स और द फर्स्ट वर्ड ऑफ द
sentence starts with a capital letter, and the commas, stop, full stop, and exclamation or question mark, they are placed inside the closing inverted commas. Now example, they asked, can we sing with you? यहाँ पे कैन सी यहाँ पे कैपिटल है, तो इसी तरह ये फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का, जो दीज आर द स्पोकन वर्ड्स, एंड जो ये क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो मार्क ऑफ क्वेश्चन जो है दैट हैज़ बीन केप्ट विद इन द ब्रेस, विद इन द कोट्स. If direct speech comes after the information about who is speaking, a comma is used to introduce the speech placed before the first inverted comma. For example, direct speech, he shouted, shut up. If direct speech comes after the information, right? अगर direct speech जो है वो that comes after the information about who is speaking, a comma is used to introduce the speech. वहाँ पे comma इस्तेमाल किया जाता है ताकि speech को introduce करें. Placed before the first inverted comma, यहाँ पे comma जिस तरह he shouted, यहाँ पे first comma जो है वो लगाया गया है. Direct speech example, thinking back he said she did not, thinking back he said she did not expect to win, यहाँ पे so this has been separated by a comma. Comma is used to separate two direct speech, यहाँ पे two direct speech है, so this has been separated, these two direct speech have been separated by a comma, and no capital letter begins to the second negative sentence. Second sentence, जो second sentence है वहाँ पे कोई कैपिटल वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है फर्स्ट में. देखिए फॉर एग्जांपल, थिंकिंग बैक ही सेड, थिंकिंग बैक शी सेड, ही सेड, दिस इज डायरेक्ट. थिंकिंग बैक एक सेंटेंस है, यहाँ पे टी कैपिटल है, और शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू विन, शी दूसरा, शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू विन यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है, और शी यहाँ पे एस जो है वो स्टार्ट नहीं होगा कैपिटल, क्योंकि पहले जो इसका पहला सेंटेंस है वहाँ पे टी कैपिटल है इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ से जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है दैट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय कैपिटल लेटर, एंड इन द सेकंड सेंटेंस इट विल बी स्टार्टेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ठीक, सो इसको सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे कामा इस्तेमाल किया है. सो डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज ऑफ टाइप. अब चेंज ऑफ टाइप उसमें indirect speech, the words that express names in time or place are changed to words that express distance in direct speech, such as now becomes then, right? Change of time में यहाँ पे ये इस्तेमाल है. indirect speech, the words that express names, नहीं, that express nearness, in words जो express करते हैं nearness in time or place, that सॉरी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन अगेन करना चाहता हूँ. इनडायरेक्ट स्पीच, द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस नियरनेस, जिसमें वो वर्ड्स जो नियरनेस एक्सप्रेस करते हैं, किस में, टाइम में और या प्लेस में, दे आर चेंज टू चेंज वर्ड्स दैट एक्सप्रेस डिस्टेंस इन डायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जांपल, नाउ, यानी वो वर्ड्स इस्तेमाल उसमें होते हैं जो डिस्टेंस में इस्तेमाल, जो डिस्टेंस एक्सप्रेस करते हैं, यानी वो वर्ड्स जो नियरनेस इस्तेमाल होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, अब जब इनको इनडायरेक्ट में बोलते हैं तो वहाँ पे ये डिस्टेंस इस्तेमाल, दे आर चेंजिंग एंड दे एक्सप्रेस डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल, नाउ किस में चेंज होगा, देन में, हियर किस में, देयर में. सो इनडायरेक्ट स्पीच, द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस nearness in time or place or changed to words that express distance in indirect speech. indirect speech में वो words जो express करते हैं nearness, किस में nearness करते हैं, in time में और in place में, they are changed into words in the indirect speech that express the distance. For example, now किस में होता है, then में, here किस में, there में, ago, before, thus, so, today, that day, tomorrow, the next day, this, that. Let me repeat it. Now, then, now becomes then, here becomes there, ago becomes before, thus becomes so, today becomes that day, tomorrow becomes the next day, this becomes that. Yesterday becomes the day before, these becomes those, come becomes go, hence becomes thence. Next week or month becomes following week or month. Example, direct, he said
his friend came yesterday. Now indirect में he said that his friend had come the day before. Yesterday, the day before. He said that his friend had come the day before. Yesterday किस में होगा? The come the day before. Time, the time expression does not change in the if the reporting verb in the present tense or future tense. यानी time expression change नहीं होता है. अगर reporting verb किस में होगा? If the reporting verb is in the present or future tense. For example, point important point है, the time expression does not change. टाइम एक्सप्रेशन जो है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि मगर इसमें शर्त है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब, ये रूल है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट ही सेज और विल से फ्रेंड केम yesterday. He says public will say that. This is direct. यहाँ पे इन्वर्ट कॉमर्स में रखना था. He says और विल से फिर इन्वर्ट कॉमा शुरू होगा. हिज फ्रेंड कैम yesterday. तो यहाँ पे इसको हम इंटरेक्ट, यहाँ पे ये लिखने में गलती हो गई है, सो प्लीज़ करेक्ट इट. ही सेज और विल से हिज फ्रेंड कैम yesterday. तो यहाँ पे आएगा इंडायरेक्ट में ही सेज और विल से दैट हिज फ्रेंड हैड कम द डे बिफोर. रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच. द फॉलोइंग रूल्स, जब इंडायरेक्ट किस में तब्दील करेंगे? डायरेक्ट स्पीच में. द फॉलोइंग रूल्स शुड बी फॉलोड व्हाइल कन्वर्टिंग एन इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच. आज इतना ही. इसके बाकी जो रूल्स हैं, हम कन्वर्टिंग फ्रॉम इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम और एक लेसन बनाएंगे, फिर पढ़ेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.